Hazrat Abu Darda radiallahu ta'ala anhu narrates that the Honorable Messenger, the most dignified Messenger, the most respected Prophet of Islam, the beacon of hope, the bearer of glad tidings, a messenger of peace, an embodiment of love, an expression of mercy, an omen of happiness, a paragon of forgiveness and tolerance, the seal of prophethood, the seal of apostleship, the perfect model for mankind, the jewel of creation, the shimmering of solace, the holder of the Maqam-e Mahmud, the leader of the Ummah, the beloved of Allah, the beloved of all, the warmer of hearts, the coolness to eyes, the beloved Prophet, Hazrat Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. States, Hazrat Abu Darda radiallahu ta'ala anhu states that the Holy Prophet, peace be upon him, stated, Laisa min abdin yusalli alayya illa balagani sautu haisu kana. As my Shaykh, my father, my mentor, my Pir Murshid was reciting and stating a while ago, he stated, Laisa min abdin yusalli alayya illa balagani sautuhu haisu kana. Whosoever a person, wherever he may be, when he recites Darood on me, I myself listen to the recitation of Darood Sharif. हुजूर ने फरमाया कोई बंदा कहीं पर भी हो जब वो दुरूद पढ़ता है तो उसकी आवाज़ मैं खुद सुनता हूँ. This means that the Holy Prophet, peace be upon him, if he can listen, he can definitely recognize as well. अगर वो सुन सकते हैं तो वो पहचान भी सकते हैं, तो वो पहचान भी सकते हैं. Hazrat Anas bin Malik radiallahu ta'ala anhu narrates that the Holy Prophet, peace be upon him, stated, when two persons having love for the sake of Allah Almighty meet and then sends blessed Darood on me, even before they get up, their previous sins are forgiven. And likewise in Sunan Tirmidhi Sharif, it is well recorded that the beloved, peace be upon him, stated, during the day of judgment, Yawm al-Qiyamah, from amongst the people, the person closest to me in proximity will be the person who sends the greatest amount of Darood upon me. So my Pir Murshid, Sayyidi Shaykh Muhammad Muhsin Munawwar Yusufi, he states that Darood Sharif is a sign of lovers. The Holy Prophet, peace be upon him, is the reason of existence. And Darood Sharif and the recitation of Darood Sharif is an omen of love, highlighting that this person loves the Holy Prophet, peace be upon him. अभी सैयदी शेख मोहम्मद मोहसिन मुनव्वर यूसुफ़ी फरमा रहे थे अपना वाक़या कि किस तरह एक मुरीद जो आपके मुरीद हैं और आपके खुलफा में से भी हैं, किस तरह एक मुरीद का सवाल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसका जवाब खुद आपकी बारगाह में फरमाया. मैं आपसे अर्ज़ करूं, सैयदी शेख मोहम्मद मोहसिन मुनव्वर यूसुफ़ी, बिफोर कमिंग टू इंग्लैंड ही वेंट इनटू अ स्टेट ऑफ पैरालिसिस. आपको फॉलेज हो गया और एंड ही वेंट बेड रिडन फॉर क्वाइट अ वाइल. उनको ब्रेन हेमरेज हो गया और फिर ही वेंट इनटू अ स्टेट ऑफ पैरालिसिस फॉर अ गुड फ्यू वीक्स. He couldn't move. Half the body went into a state of paralysis. But then the eyes of the heart, they opened. The eyes of the heart, they opened. एक दिन आपके एक मुरीद मुराकबे में थे कि उन्होंने देखा कि ताजदारे दो जहां, शाह सवारे लामकां, मालिक ज़मीन व आसमां, रूह कुन फ़का, हुजूर पुरनूर शाफ़ी यौमुन नुशूर, हबीब रब्बे गफ़ूर, अहमद मुश्तबा, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ़ लाए हैं और आप साथ उनको तशरीफ़ लेकर आए हैं. आप साथ उनको लेकर आए हैं जो कि हैं गीलानी जीलानी, महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, किंदीले नूरानी, गौसे समदानी, लाले बदख्शानी, तफसीर कुरानी, मीरा मुहय्यद्दीन सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु. तो आपके मुरीद बहालत मुराकबा देखते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर जहां आपको फॉलेज हुआ हुआ है, आपका आधा जिस्म काम नहीं कर रहा,
हॉस्पिटल के अंदर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं हजूर गौसे आज़म के साथ, और उन्होंने आपके जिस्म मुबारक के ऊपर अपना दस्ते अनवर फेरा है, और जिस लम्हे उन्होंने दस्ते अनवर फेरा उसी लम्हे इनकी पूरे जिस्म का फॉल्स ठीक हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। And the annals of history do record these events as well. इमाम शरफुद्दीन बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह, आपने मशहूर ज़माना कसीदा बुर्दा शरीफ लिखा, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिमी। इमाम शरफुद्दीन बुसीरी, a saint of Allah, a friend of Allah, a beloved of Allah. He also went into the state of paralysis. आपको भी फॉलेज हो गया, और आपको जब फॉलेज हुआ तो आपने उस हालत के अंदर कसीदा बुर्दा शरीफ हजूर की बारगाह में लिखा। तो फिर एक बाबा जी का वाक़या हुआ, एक बाबा जी ने देखा कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं, आपने हज़रत इमाम शरफुद्दीन बुसीरी के ऊपर चादर रखी है और आपने उनके जिस्म के ऊपर दस्ते अनवर फेरा, तो फॉलेज जब सुबह उठे तो ख़त्म हो चुका था, और वो चादर जो ख्वाब में रखी थी वो चादर भी मौजूद थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुरूद सुन सकते हैं तो फिर अपने गुलामों को पहचान भी सकते हैं। The man of ineffable grandeur and majesty in the realm of Islamic mysticism, the human manifestation of divine consciousness, the highest saint in the hierarchical structure of saints, the revered saint, the celebrated saint, the unprecedented saint, the unrivaled saint, the unparalleled saint, the illuminated saint, the unfathomable saint, the leader of saints, the sovereign of saints, the jewel of saints, the crown of saints, Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani radiyallahu ta'ala. He states, "Chun zarra zarra shuwad, ita nam bakha ke lahad, tu bashunvi salawat as jami zarratam." Hazur Ghaus Azam states that on the day of judgment, in my grave, even if my body was to turn into an infinite particles, in my grave, even if my body was to turn into an infinite particles, you would listen to the recitation of Darood Sharif from every single particle, atom of my body. हजूर गौसे आज़म ने फरमाया कि कब्र में मेरे जिस्म का अगर रेज़ा 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 भी हो जाए तो मेरे जिस्म के हर ज़र्रे से आप कब्र में दुरूद व सलाम की आवाज़ सुनेंगे। So the Holy Prophet, peace be upon him, is the honor and endearment of the whole universe. And the Holy Prophet, peace be upon him, he is not merely a revered figure for Muslims, but he is the most beloved of all creation. He is the crown of existence and the mercy for the mankind. The sun brightened the path he walked upon, and the moon split at his gesture. The trees and stones bore witness to his prophethood. His noble character, radiant mercy and boundless patience, and unfailing compassion made him the embodiment of divine beauty. And it is the greatest favor of Allah Tabarak wa Ta'ala that He granted us the opportunity to be amongst the Muslims and to be amongst the followers of the Holy Prophet, peace be upon him. And Allah Tabarak wa Ta'ala states that in the Holy Quran. Allah Tabarak wa Ta'ala states, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. Now this is the Holy Quran. Allah Tabarak wa Ta'ala refers to His favor. Allah Tabarak wa Ta'ala refers to His blessing. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. Allah has indeed bestowed a great favor upon the Muslims, in that He sent to them a noble messenger from among them. So the greatest favor of Allah Tabarak wa Ta'ala on mankind is the Holy Prophet, peace be upon him.
And for a Muslim, the Holy Prophet, peace be upon him, is the center of life. The Holy Prophet, peace be upon him, stated, "None of you truly believes until I am more beloved to him than his own children, his own parents, and all of mankind." So loving the Holy Prophet, peace be upon him, is not optional. It is the heartbeat of a person's iman. It is the heartbeat of a person's faith, and it is the cornerstone of the religion Islam. When Hazrat Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu once said, "O Messenger of Allah, O Messenger of Allah, you are more beloved to me than everything except my own self." Thereupon the beloved Messenger, peace be upon him, stated, "No, by the one in whose hand is my soul, not until I am more beloved to you than your own self." कि तब तक नहीं जब तक मैं सबसे ज़्यादा तुम्हारे लिए महबूब हूँ. Hazrat Sayyidina Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu narrates that a man asked the beloved Messenger, peace be upon him, about the hour, about the day of judgment. He asked, "O Prophet of Allah, when is the hour? When is the day of judgment?" He said, "What have you prepared for it? What have you prepared for it?" The man said, "Nothing except that I love Allah and His Messenger." एक बंदा हुजूर की बारगाह में हाजिर होता है, अर्ज करता है, हुजूर क़यामत कब आएगी? हुजूर क़यामत कब आएगी? हुजूर फरमाते हैं, तुमने क्या तैयारी कर रखी है क़यामत के लिए? तुमने क़यामत के लिए क्या तैयारी कर रखी है? तो वो अर्ज करता है, हुजूर कोई तैयारी नहीं है, बस ये है कि अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत है. तो फिर हुजूर ने फरमाया, द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम स्टेटेड, "यू विल बी विद दोज हुम यू लव." तो फिर जिससे तुम मोहब्बत रखते हो, क़यामत वाले दिन तुम उसी के साथ होगे. क़यामत वाले दिन तुम उसी के साथ होगे. हम जितना भी हुजूर का जिक्र करें उतना कम है. शेख सादी शराजी रहमतुल्लाह अलैह, शेख सादी शराजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, thousand times were I to wash my mouth with a perfume, I would still not be capable enough to praise the beloved Prophet, peace be upon him. आप फरमाते हैं कि 1000 दफ़ा भी मैं अपने मुंह के अंदर मुश्क भी डाल दूं, तब भी मैं इस काबिल नहीं कि आकाए दो जहां का जिक्र कर सकूं. Hazrat Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu narrates that the Holy Prophet, peace be upon him, stated that the people who love me beyond degree will come after me. And just to have a glimpse of me, they would sacrifice their wealth and families. दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए. आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठें भी वहाँ तुम्हारे लिए. The reason of existence, Urwa bin Masud Saqafi was the ambassador of the Quraysh at the time of the Treaty of Hudaybiyah. On his return to Makkah, he said to them, "I witnessed some amazing events and incidences when Muhammad, the beloved Prophet, peace be upon him, when Muhammad performed his ablution, his disciples did not let a drop of water fall on the ground, and they collected it in their hands, let alone a drop of blood." So we, the Ummah of the Holy Prophet, peace be upon him, are unlike any other people in history. Our identity, our purpose, our salvation are rooted in a single cause, unshakable foundation, love for the Holy Prophet, peace be upon him. Someone asked Allama Iqbal as to what is the unifying force which unites the Muslims.
He didn't say salat. He didn't say zakat. There was only one thing that he stated कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं. So Allama Iqbal stated that if there is one force that unifies a Muslim and unifies the Muslims and their brotherhood, it's the love for the noble messenger, peace be upon him. It's नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया. So it's love for the Holy Prophet, peace be upon him. Another companion, another beloved companion of the beloved messenger, peace be upon him. He looked sad. He looked sad. He arrived in the noble and blessed and sacred court of the noble messenger. He was sad. The Holy Prophet, peace be upon him, asked, why is he sad? He stated, O Prophet of Allah, I am sad for I think that in this world, whenever we feel restless, whenever we feel sad, we arrive in your presence and we quench our thirst in that manner. O Prophet of Allah, आका, यहाँ जब भी दिल उदास होता है आपकी बारगाह में हाजिर हो जाते हैं, आपकी ज़ियारत कर लेते हैं, प्यास ख़त्म हो जाती है. मगर आका, I think, I ponder, I contemplate what will happen in the day of judgment and what will happen after the day of judgment when you shall be somewhere in the higher stations with the other prophets. There at that time when my heart shall be restless, where shall I go? आका, यहाँ तो जब भी दिल उदास होता है आपकी बारगाह में हाजिर हो जाते हैं. क़यामत के दिन बाद में जब दिल उदास होगा, आपको देखने को जी चाहेगा, तो आका क्या करेंगे? सोचता हूँ आप तो ऊंचे अंबिया के साथ ऊंचे मकामात के ऊपर होंगे. तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप खामोश हो गए. इतनी देर में आर्च एंजल हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम arrives, and he stated that Allah tabarak wa ta'ala states, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. And he who obeys Allah and the messenger, peace be upon him, they shall be with those whom Allah has favored, the prophets, those steadfast in truthfulness, the martyrs and the righteous. सुभान अल्लाह, सुभान तो वो फरमाते हैं कि जिस वक्त मैंने ये अर्ज़ की कि हुजूर यहाँ जब भी दिल उदास होता है आपकी बारगाह में हाजिर होते हैं, on the day of judgment, how shall we arrive in your presence? How shall we record our attendance in your presence? And it was at that time when the mere silence of the beloved was actioned too by Allah Tabarak wa Ta'ala in the form of a Quranic verse, wherein Allah Tabarak wa Ta'ala stated and gave the glad tidings to the followers and the ummah of the Holy Prophet, peace be upon him, that the ones who follow you and the ones who follow Allah Tabarak wa Ta'ala in the synopsis, they shall be with them on the day of judgment. तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है, ए जलवाए जानाना, संगे दर जाना पर करता हूँ जबी साई, संगे दर जाना पर करता हूँ जबी साई, सजदा न समझ नजदी, सर देता हूँ नजराना, तू शम्मे रिसालत है, आलम
तेरा परवाना. Hazrat Khubayb bin Adi, love unto death. Love unto death, when he was captured by the Quraysh, by the Kuffar, and he was asked, "O Khubayb, would you not prefer that Muhammad be in your place today, captured by us, and you be free somewhere?" Thereupon Hazrat Khubayb, a beloved companion of the beloved Messenger, peace be upon him, replied, "By Allah, I would not even let a thorn prick the Holy Prophet, peace be upon him, while I sit safely somewhere else." So this is the love of the Sahaba. This is the love that Allah Tabarak wa Ta'ala has taught us for the Holy Prophet, peace be upon him. Everything is sacrificed for him. Everything is sacrificed for him. In the cave of Saur, the blessed companion of the Holy Prophet, peace be upon him, Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala, Hazrat Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala, when he was there in the cave of Saur with his beloved, every hole he plugged every hole with his clothing. He tore off his clothes and he plugged every hole in the cave with his clothing. Why? Because there was a poisonous snake at the back in one of the holes. There was a poisonous snake back in one of the holes of the cave, and he remained silent with that when that snake bit Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala. Tears started to drop, and that is when the Holy Prophet, peace be upon him, he opened his eyes and he saw Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala, that he had closed all of the holes of the cave with his clothes. All of the holes of the cave with his clothes, but one single hole through which the snake appeared and bit off the feet of Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala. However, he did not let the Holy Prophet, peace be upon him, sleep be disturbed. So that is the love of the Sahaba for the Holy Prophet, peace be upon him. Allah Tabarak wa Ta'ala states in the Holy Quran, "There has come to you a messenger from amongst yourselves. Grievous to him is what you suffer. He is concerned over you, and to the believers is kind and merciful." Gilani, Jilani, Mahbub Subhani, Kutb Rabbani, Kindile Nurani, Ghaus Samadani, Lale Badakhshani, Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani radiyallahu ta'ala, he stated, "I am an advisor and I do not want any reward for it. My happiness lies in your success and my sadness lies in your destruction. When I see the face of an honest disciple who has succeeded at my hands, it is at that time that I feel satisfied." So the Holy Prophet, peace be upon him, he always thought about us. It is recorded in Sunan al-Tirmidhi Sharif that even in his last moments, before his demise took place, there was one thing that he kept on repeating: "My ummah, my ummah, my ummah." At the time of at the time of Miraj, the ascension of Miraj, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं, तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मिराज के सफ़र पे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर जाना था, तो देखते हैं कि हुज़ूर आराम फरमा रहे हैं. द होली प्रॉफिट, पीस बी अपॉन हिम, इज़ रेस्टिंग. सोचते हैं कि अब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कैसे अर्ज़ की जाए कि या रसूलुल्लाह, वक्त आ चुका है मिराज का, आप सफ़र करना है. या रसूलुल्लाह, आप सफ़र करना है. सोच रहे हैं कि हुज़ूर को उठाएं कैसे. अल्लाह ताला खुद आदाब रसूल सिखा रहा है. हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अब उठाएं कैसे. अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, जिब्रील मेरे महबूब के कदमों को बोसा दो. मालूम हुआ कि जब हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा रहे हों तो ज़ुबान से आवाज़ देकर मत उठाओ, कदमों को अदब के साथ बोसा दो और इंतज़ार करो. Hazrat Jibreel alayhi salam humbly kissed the feet of the Holy Prophet, peace be upon him, and the Holy Prophet, peace be upon him, opened his eyes. Hazrat Jibreel then said, "O Prophet of Allah, the time has come. The time for the journey of Miraj has come."
अब हजूर अलैहिस्सलाम बुराक पर तशरीफ़ फरमा होने लगे। हजूर अलैहिस्सलाम बुराक पर तशरीफ़ फरमा होने लगे तो सोच में चले गए, तवक्कुफ़ फरमाने लग गए। हज़रत जिब्राईल ने अर्ज़ की, हुजूर आप तवक्कुफ़ क्यों फरमाते हैं, क्या सोचते हैं आप? यू आर अबाउट टू असेंड द जर्नी ऑफ मिराज, व्हाई डू यू कॉन्टेम्पलेट, व्हाई डू यू स्टॉप, व्हाई डू यू थिंक? ही हम्बली इंक्वायर्ड। हजूर अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, जिब्राईल मैं सोचता हूँ आज नवाज़शात के नज़ूल का खसूसी वक्त है, सुभान अल्लाह, मगर जिब्राईल मेरी उम्मत सुभान अल्लाह, पुल सरात, क़यामत का वक्त करीब होगा, पुल सरात होगा, मेरी उम्मत जिब्राईल, मैं अपनी उम्मत के बारे में सोचता हूँ। यहाँ बंदा ने चीज़ एक बात अक्सर अर्ज़ करता है जो हमारे पीर मुर्शिद सैयदी शेख मोहम्मद मोहसिन मुनव्वर यूसुफ़ी तालीम फरमाते हैं। वो फरमाते हैं कि वो मालिक होकर हमें याद कर सकते हैं, हम ग़ुलाम होकर नहीं याद कर सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, काम तो ग़ुलाम का है कि मालिक। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप अपनी उम्मत को बार बार सोचते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा फरमाती हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरी पूरी रात सजदा रेज़ होते, क़याम भी फरमाते, इतना कि आपकी पिंडलियाँ सूज जाती, अल्लाह, अपनी उम्मत के लिए दुआ करते रहते, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहते। मगर जब हम देखें अपने आप को, वो मालिक होकर पूरी पूरी रात गुजार कर हमें याद कर सकते हैं। जैसा अभी हज़रत ने हदीस पढ़ी, लैसा मिन अब्दिन युसल्ली अलैया इल्ला बलगनी सौतु हैसु काना, that whosoever a person when he recites durood on me, I myself listen to the recitation of that durood sharif। इसका मतलब जब वो सुन सकते हैं तो वो पहचान भी सकते हैं, और जब वो सुनते हैं तो वो पहचानते भी हैं। तो हमें इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, एंड वी हैव सेंट यू ओ मुहम्मद, वी हैव नॉट सेंट यू ओ मुहम्मद एक्सेप्ट एज अ मर्सी टू द वर्ल्ड्स, सुभान अल्लाह, except as a mercy to the worlds. And the Holy Prophet, peace be upon him, is indeed the perfect model for us to follow. And Allah Tabarak wa Ta'ala states that in the Holy Quran as well, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, सुभान अल्लाह, surely you have the best in the following of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. May Allah Tabarak wa Ta'ala enable us to follow the paths of the Holy Prophet, peace be upon him, and his loved ones. And this sohbat, where we attend these gatherings in the presence of the saintly ones, the daily ones, the saints of Allah, the beloveds of Allah. Hazrat Maulana Rumi stated, Yak zabana sohbat baoliya. As Hazrat rightfully stated a while ago, Yak zamana sohbat baoliya, behtara sad salatat berya. A single moment spent in the company of a saint of Allah is better than 100 years you spend worshipping Allah Tabarak wa Ta'ala constantly. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alameen.